Hello friends, welcome to ProTalent, and this is one of the important session we are doing, which is session number 3 on Indian Constitution. So far, we have covered two important sessions. पहले session के अंदर we discussed about what is the nature of our constitution, उसका overall breakup क्या था, in terms of how many parts were there, what is the meaning of schedule, what is the meaning of preamble, what is the nature of the entire political system of our country. Number 2, we discussed on in our session number 2, we discussed on three important things. So now from session number 2 onwards, we started to discuss in detail about part by part. So I'm sure you know that there is a part 1, part 2 and part 3. We are on part 3, and in part 1 we discussed that it is all about the name of the country. It is called Union of India, and more importantly we discussed about that how and in what manner states can be formed. That's what we discussed in the part 1. In part 2, we discussed about citizenship. In India, there are 5 ways in which someone can acquire citizenship of our country. One is by birth, other is by descent, other by registration, other by naturalization, and number 5 is by acquiring territory. It is by the constitution. So constitution says that if we acquire another territory, automatically the people of that particular area will become part of that. The example could be if you know that there was 100th amendment, भारत में एक 100वां अमेंडमेंट हुआ था जिसके अंदर इंडिया के कुछ टेरिटरी, इंडिया के कुछ भाग बांग्लादेश में थे और बांग्लादेश के कुछ भाग इंडिया में थे. That was, you can say, when the Red Cliff line was developed between India and Pakistan. जब इंडिया और पाकिस्तान का डिवीजन हुआ तब उनके बीच में एक रेड क्लिफ लाइन आई और उस रेड क्लिफ लाइन की वजह से, है ना, ये इंडिया और बांग्लादेश अलग तो हुआ, पर फिर भी कुछ एरिया which is basically a part of India, but they were actually surrounded by Bangladesh. So those are called enclaves. Similarly, certain enclaves of Bangladesh, they were in India. Okay, ठीक है. तो क्या हुआ, 100th amendment के अंदर Parliament decided that we will leave our enclaves and give to Bangladesh, and in turn Bangladesh will leave their enclave and will be part of India, and automatically people of those Bangladeshi enclaves in India will automatically become citizen of this country, and the other people there, they will become citizen of Bangladesh. So that was basically, you can say, citizenship related issue as well as that land related. So part 1 part 2 दोनों में cover हुआ. That was our 100th amendment. Okay, ठीक है. उसके बाद आया 101th amendment which is a GST. ठीक है, तो अभी तक तो उतने amendment है, but anyway, so we discussed about that part number 2. Then we discussed about part number 3, which was fundamental rights. So overall the video was becoming a little longish, so we divided that into second part. Okay, so this is part 2 of fundamental rights, and in the initial part we discussed about that fundamental rights are available either to citizens or it is available to any person. Okay, now these rights are available against the state. Okay, so for we can say getting rights against an individual, they become legal right, and we have to go to the court and possibly ask court to, we can say, give us those rights. Okay, so that's about the rights available against the state. So we have article number 12 which talks about the definition of the state, and then article number 13 talks about supremacy of fundamental rights. That means fundamental rights are supreme. Okay, any law in India which are made and which are in derogation of fundamental right or which are against the basics, or those rights which take away, or those rights which take away the fundamental right, will become void. Okay, and we saw example of Information Technology Act 2000, article number 66A under that. Okay, and then we went to talk about certain articles. So we discussed about article number 14, and then we discussed about article number 19. Article number 14 talks about the rights related to equality before law and equal protection of law, and then
there are discussion about no discrimination, removal of untouchability, and state shall not discriminate only on the ground of region, religion, caste, and or race kind of thing. Okay, so after article number 14 we discussed about article number 19. Okay, now article number 19 gives different kind of freedom. आर्टिकल 19 हमें अलग अलग तरीके की स्वतंत्रता देता था, और वो स्वतंत्रता के बाद now we are moving towards article number 20. Article number 20 turns out to be very critical because when our forefathers made this constitution, they also relied on one important information. जब ब्रिटिशर इंडिया में राज करते थे, तब अगर ब्रिटिशर ने कोई इंडियन को जेल में डाल दिया, ठीक है, उसको अगर कोई ऑफेंस के लिए जेल में डाल दिया, then that person may not have lot of rights. ठीक है, उस बंदे के पास ज्यादातर को राइट्स मिलते नहीं थे. तो हमने उनके भी अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए ये तीन चीजें लगा के रखी है. दैट इज कॉल्ड प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस. ठीक है, अगर कोई भी बंदा कोई ऑफेंस कर रहा है, उस ऑफेंस के लिए वो कन्विक्ट हो गया, फिर भी उसके पास तीन मजेदार से प्रोटेक्शन अवेलेबल है. पहला प्रोटेक्शन दैट इज कॉल्ड protection against ex post facto law. Protection against ex post facto laws. What do you mean by ex post facto? No person shall be convicted of any offense except for a violation of a law in force at the time of commission of an act charged as an offense, nor be subjected to a penalty greater than that which might have been inflicted under the law in force at the time of commission of the offense. ठीक है, उसका क्या मतलब हुआ कि भैया कोई भी लॉ जो है that cannot impose penalty retroactively. okay, कोई भी प्रीवियस डेट से कोई भी पेनल्टी लगेगी नहीं, और increases the penalty for the past acts. For example, जहां पे निर्भया गैंग रेप केस जो हुआ था, I'm sure every one of you are aware about that case. That was in Delhi, and at the time of commission of that crime, the rule says that juvenile, that means the minor child, would be considered to be of 18 year or below. Okay, ठीक है, जब one of the convicted person was of 17 and a half years of age, ठीक है, but he was considered as juvenile because the law said that law was changed after 6 months of that case, and juvenile ka age has been reduced from 18 to 16, but still that 16 was not applicable with a retroactive effect, और उस पर्सन को मतलब जुवेनाइल मानकर, ठीक है, उसको 3 साल की सजा देकर छोड़ दिया गया था. सो दैट वाज बेसिकली एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ. प्रीवियस डेट से कोई भी लॉ लगेगा नहीं, ये ध्यान रखिएगा. दिस इज प्राइमरली for the crime related thing. For certain laws related to possible income tax or indirect taxation, there may be a possibility that the law may be applicable with a retroactive effect, but penalty will not be coming with a retroactive effect. Okay, coming to number 2, protection against double jeopardy. What is the meaning of double jeopardy? Jeopardy is to put someone into danger. Jeopardy का मतलब होता है to put someone into danger, and double jeopardy to put someone into danger twice. That's the meaning of double jeopardy. So no person shall be prosecuted and punished for the same offense more than once. Okay, अगर किसी ने कोई क्राइम किया है, let's take an example, कि अगर कोई बंदे ने चोरी करी है, चोरी करने की लेट अस अज्यूम उसको 6 महीने की सजा मिली है, ठीक है, and he completes that punishment, and now state cannot tell him कि भाई आपने उस समय पे चोरी करी थी तो वापस आप जेल में आइए, वो नहीं चलेगा. Okay, so that is for the same offense nobody can be punished twice. A man must not be put in the peril twice for the same offense. If a person is prosecuted and acquitted, then he cannot be prosecuted for the same offense again. Okay, chaliye, great. So that is number 2, protection against double jeopardy. And then number 3, protection against self incrimination. So no person accused of any offense shall be compelled
to be a witness against himself. Parallel provision are put in Indian Evidence Act and Criminal Procedure Code to support this idea कि आप, that is a person who is accused, ठीक है, will not be considered as a witness against himself, which means पुलिस के सामने जो भी आपने बातें बोली है, that may not be considered as an evidence in front of magistrate, और मैजिस्ट्रेट के सामने जो भी आप बोलोगे वही चीज को एक एविडेंस के तरीके से एक्सेप्ट किया जाएगा. So these are the kind of provisions available for protection in the respect of conviction for offenses. ठीक है, just imagine हम में से कोई बंदा, है ना, कोई कारणों की वजह से, है ना, शायद हमारे पे कोई आरोप लग जाए और हम जेल में चले जाए, तो हमारे पास ये अधिकार है ताकि हम सिर्फ हमारे ऊपर आरोप लगा है इसकी वजह से हमारे सब राइट चले जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता. Okay, so that is how this kind of rights are provided. These are for the purpose of protection in the respect of conviction of for offense. Okay, chaliye, great. So that's article number 20. And now we go to article number 21, which is considered to be one of the very important article. Article number 21 talks about protection of life and personal liberty. ये जो आर्टिकल है, ये जो अधिकार है, ये जो फंडामेंटल राइट है, ये ऐसा अधिकार है, ऐसा फंडामेंटल राइट है जिसको एकदम ब्रॉडेस्ट सेंस में गिना जाता है. ठीक है, इट सेज प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड. रिमेंबर, दिस इज नो पर्सन. ठीक है, दिस इज एप्लीकेबल टू एवरीवन. ठीक है, करीबन 2012 में एक बहुत मजेदार सा केस हुआ था. देयर वाज अ प्रोफेसर फ्रॉम इजिप्ट. ही केम टू इंडिया to deliver a particular course at one of the state in Bihar. He came on a visa for a temporary period. ठीक है, उसका वीजा एक्सपायर हो गया. By the time he wanted to leave this country, इजिप्ट में सिविल वॉर चालू हो गई और उसकी वजह से यहाँ से, दैट इज इंडिया से इजिप्ट की कनेक्टिविटी इफेक्टिवली खत्म हो गई थी. So therefore he couldn't go back to Egypt. But the certain visa officers said that said to that professor, you have to leave, आपका वीजा खत्म हो गया है. Then Supreme Court said that Article 21 के मुताबिक this person has a right, that is protection of life and personal liberty, और उस पर्पस की वजह से when he cannot leave this country because there is a civil war going on in his country, this person shall be protected in India. उसका वीजा एक्सटेंड कर दिया जाए. So this is given to everyone, not only to the citizens. So no person shall be deprived of his life and life or personal liberty except according to the procedure established by law. So there is, or there may be restriction available. There may be restriction in terms of protection of life and personal liberty, which is according to the procedure established by law. ठीक है. So this is not only that should be a law, but law must be fair and reasonable. That is what the idea here in terms of this protection of life and personal liberty. Remember article number 14, this is equality before law. 19, freedom, and 21, they are connected. How are they connected? If there is equality of justice, only then you have possibly a kind of liberty available. So that is what the article number 14, 19, 21 are connected. The personal liberty in article number 21 was to be given widest amplitude. उसको एक ब्रॉडेस्ट सेंस में गिना जा रहा है. ठीक है, फॉर एग्जांपल आधार कार्ड के द्वारा जो कंट्रोवर्सी चलती थी और उसके द्वारा जो राइट टू प्राइवेसी के बारे में जो बात हो रही थी, राइट टू प्राइवेसी. सो ये राइट टू प्राइवेसी इज आवर फंडामेंटल राइट, ऐसा प्रूव हुआ अंडर आर्टिकल नंबर 21. अंडर आर्टिकल नंबर 21. ठीक है, कुछ कुछ देशों में, है ना, कुछ कुछ देशों में जो आर्टिकल नंबर 21 है जो भारत का, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, उसको बहुत ब्रॉडेस्ट सेंस में लिया जाता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट मी टॉक अबाउट अ केस इन यूके. यूके में एक बहुत मजेदार सा केस है जहां पे कोई एक पर्सन था जिसके ऊपर आरोप लगा था और उसके बाद उसको सजा हुई. ही गॉट कन्विक्टेड एंड ही वेंट टू जेल, एंड जेल में पनिशमेंट खत्म करने के बाद जब वो बाहर आया, ठीक है, एंड ही ट्राइड टू सर्च हिज नेम ऑन गूगल, and Google still continued to, you can say, put that person's detail as he was a criminal. Google ने
अभी भी उस आदमी को क्रिमिनल तरीके से ही दिखाया, उसने बोला कि भाई मैं क्रिमिनल था, मुझे उसकी पनिशमेंट मिल चुकी है, तो आई हैव अ राइट टू बी फॉरगॉटन, और इसकी वजह से मेरा ये नाम, मेरा ये डिटेल इसमें से हटा दीजिए. Google said we cannot do that, it's software, okay, and software will work on a rank based system. ठीक है, तो बिल्कुल बात मतलब उसने बोला कि भाई आपकी बात बराबर है, बट स्टिल आई एम अफेक्टेड, सो वेंट टू द कोर्ट एंड the court of England said that it's a part and parcel of right to life. So right to be forgotten is acceptable in certain other countries. Possibly India में अभी तो नहीं है, पर इंडिया में right to privacy has become a fundamental right. ठीक है, आजकल बातें चल रही है जहां पे एक पॉसिबली एक मुहिम चालू होने वाली है जो बोलता है दैट राइट टू गेट टाइमली सर्विस फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट to get timely service from government of India is a part of right to life, okay, and therefore that is to be protected. For example, भारत में काफी समय से जो लोकपाल और लोकायुक्त का जो अपॉइंटमेंट होना चाहिए, जो अभी तक हुआ नहीं है, जिसकी वजह से एज अ सिटीजन यू एंड आई आर नॉट गेटिंग प्रॉपर सर्विसेज फ्रॉम आवर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. We have a grievances, we want to complain, and we are not able to complain because there is no lokpal and there is no लोकायुक्त. Very few states have लोकायुक्त. ठीक है, so लोकपाल का जो बिल है, ठीक है, वो 2013 में पास हो गया था. ओके, लोकपाल एंड लोकायुक्त, ओके, वो 2013 में पास हो गया था. अब वो अभी तक, है ना, उसके मुताबिक लोकपाल अभी तक अपॉइंट हुए नहीं है, तो वो हमारी राइट टू लाइफ को अफेक्ट करता है. सो दैट इज हाउ इट इज वाइडेस्ट एम्पलीट्यूड. I hope you understand that. I've covered many aspects in it. ठीक है, article number 20 and 21 cannot be suspended during emergency. Even during the emergency time, these two articles, article number 20 and 21, cannot be suspended. And remember, article 21 can also be available to the foreign citizens. Foreign citizens के लिए भी available है. So that is how article number 21. Article number 21 में एक अमेंडमेंट किया था हमने, और उसके द्वारा आर्टिकल नंबर 21 ए लेकर आए थे, जिसका नाम है राइट टू एजुकेशन, आरटीई. आरटीई भाई 6 साल से 14 साल के बच्चों के लिए, 6 साल से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन is a part and parcel of right to life, okay, and therefore this is called right to education, which is a part of article number 21. Earlier this you can say free and compulsory education was a part of DPSP, Directive Principles of State Policies. ठीक है, हम आगे जाके देखते हैं Directive Principles of State Policies क्या होती है. ठीक है, पर वो DPSP का पार्ट था, अब वो फंडामेंटल राइट्स का पार्ट बन चुका है. Okay, so that's about article number 21. So with this, let me go and talk about article number 22. Now article number 22 talks about protection against arrest and detention in certain cases. ठीक है, now this is very important. Article number 22, no person who is arrested shall be detained in a custody without being informed as soon as may be of the grounds for such arrest, nor shall he be denied the right to consult or to be defended by a legal practitioner of his choice. कोई भी बंदे को बगैर इन्फॉर्म किए उसको पकड़ के जेल में नहीं डाला जाएगा. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ही हैज अ राइट टू गेट अ कंसल्टेंसी फ्रॉम अ लीगल प्रैक्टिशनर इन अवर कंट्री. सिमिलरली, एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन इन अ कस्टडी shall be produced before the nearest magistrate within a period of 24 hours. 24 घंटों के अंदर, है ना, उस बंदे को हम मैजिस्ट्रेट के सामने खड़ा करना बहुत जरूरी है. ठीक है, excluding the time necessary for the journey from place of arrest to a court of magistrate. ठीक है, तो ये सब समय निकालकर एक रफली 24 आवर्स की गणित यहाँ पे लगाई जा रही है, which means किसी बंदे को कोई भी स्टेट अपनी मन मर्जी से पकड़ के जेल में नहीं डाल सकता है. Okay, so that's about article number 22. Then we have article number 23 and article number 24. Article number 23 and article number 24 talks about prohibition of trafficking in human beings and forced labor as well as child labor. Okay, so that is what article number 23.
very important, prohibition of traffic in human being and forced labor. To ensure that humans can live dignified life in our country, it is very important to stop human trafficking और forced labor. भारत में और पूरे विश्व में बहुत सारी जगहों पे ये फोर्स्ड लेबर और ह्यूमन ट्रैफिकिंग चलता था, ठीक है. इनफैक्ट स्लेवरी वाज अ वेरी प्रोमिनेंट इश्यू इन यूएसए एज वेल, जिसकी वजह से वहां पे सिविल वॉर हुई थी, है ना. अब्राहम लिंकन, जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में जो लड़ाई हुई, उसके बाद अब्राहम लिंकन को जीत मिली. सो दैट वाज बेसिकली बिकॉज ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, है ना. तो वो इंडिया में 1947 जब से देश बना, तब से हमने बोला दैट हैज टू बी removed, that is to be removed. It's a prohibited thing. And also prohibition of employment of children in the factories. Again, no child below the age of 14 shall be employed to work in any factory, mine, or engaged in any hazardous employment, or now in any work except in family work, that is acceptable, or possibly working in advertisements or TV channels or movies, that is acceptable. But अब ये जो prohibition है, now that fights with article number 21A, which is called right to education. एक तरफ आप right to education दे रहे हैं, जहां पे फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देना है, और एक तरफ अगर चाइल्ड लेबर चलता है तो वो चलेगा नहीं. और इसकी वजह से उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, आरटीई को प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना, हमने अभी लेटेस्ट मॉडिफिकेशन करके आर्टिकल नंबर 24 के अंदर हमने बोला है कि कोई भी तरीके का काम 14 साल से कम वाले बच्चों के लिए नहीं करवाया जाएगा. एंड मोर इम्पोर्टेंटली, अगर वो बच्चा टीवी चैनल्स में, एडवर्टीजमेंट्स में या मूवीज में काम करता है, सो दैट इज आफ्टर स्कूल आवर्स एंड वेकेशन टाइम में. सो दिस इज व्हाट बेसिकली पार्ट ऑफ आर्टिकल नंबर 24. आई एम श्योर you know that from India, someone called Mr. Kailash Satyarthi, who has worked very hard for removing child labor from our country. So far, we have, you can say, reached a reasonable level because of his efforts. And for his efforts, in 2015, he got Nobel Peace Prize. Nobel Peace Prize, Kailash Satyarthi, उनकी जो संस्था है, बचपन बचाओ आंदोलन. क्या संस्था का नाम है? बचपन बचाओ आंदोलन. उसके द्वारा ये उन्होंने प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी थी. सो दैट वाज अबाउट आर्टिकल नंबर 23 एंड आर्टिकल नंबर 24. एंड नाउ वी टॉक अबाउट नेक्स्ट ग्रुप ऑफ आर्टिकल व्हिच आर रिलेटेड टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन. दे आर रिलेटेड टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन. सो देयर आर आर्टिकल नंबर 25, 26, 27, 28. This all together, they are telling us that there is a freedom of religion in our country. Okay. So we are secular, as we discussed in the preamble, that we treat all religion equal, and therefore it is very important to put separate rights about freedom of religion. Okay. So what is the article number 21 says? Freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion. ठीक है, which is subject to public order, morality, health. ठीक है, तो ये अगर किसी पब्लिक ऑर्डर को अफेक्ट नहीं करता है, मॉरलिटी को अफेक्ट नहीं करता है, हेल्थ को अफेक्ट नहीं करता है, देन पर्सन कैन हैव अ फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस. मन में जो रखना है, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन. जो धर्म का कॉन्साइंस मन में रखना है, जिस तरीके से उसको प्रोफेस करना है, प्रैक्टिस करना है, प्रोपोगेट करना है, कर सकता है, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, morality and health. Similarly, article number 26 talks about freedom to manage religious affairs. ठीक है, that means भाई कोई भी बंदा अपना कोई religious institution को establish करना चाहे, administer करना चाहे, manage करना चाहे या own करना चाहे, that is really possible. That freedom is provided. And article number 27 says that freedom as to payment of taxes for the promotion of any particular रिलीजन. कोई रिलीजन को प्रमोट करने के लिए कोई भी तरीके का टैक्स नहीं लगाया जाएगा. भारत ने एक्सपीरियंस किया था मुगलों के समय के दौरान, द जजिया टैक्स हुआ करता था. ये जजिया टैक्स जो होता था, दैट वाज मुस्लिम रूलर्स यूज्ड टू पुट ऑन हिंदू पीपल, सेइंग दैट वी आर प्रोटेक्टिंग योर रिलीजन एंड देयरफॉर यू हैव टू पे टैक्स. ओके, सो हियर वी अंडरस्टूड दैट रिलीजन कैन नॉट बी पुट इनटू सच सिनेरियो, और इसकी वजह से हमने टैक्सेशन को रिमूव कर दिया है.
And then we have article number 28, which says freedom as to attendance at religious instructions or religious worship in certain educational institutions. That means in those educational institutions, no compulsion for attending religious instructions. किसी को भी forcefully religious instructions follow करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा. So that was the freedom of religion in our country. Okay, moving further, we talk about article number 29 and article number 30. Article number 29 talks about protection of interest of minorities. Remember, 29 and 30 talks about minorities. In India, we have a religious minority. ठीक है, जो हमारा constitution accept करता है religious minorities which are given to certain religion like Islam, Christianity, Parsis, Sikh, Buddhism, and latest entry is Jainism. There are 6 religions which got minority status. Okay, remember, in minority status mein protection of the interest is the important part. There is nothing like a reservation. I hope you understand that the reservation comes in a different group, and this is more of protecting their interest. Okay, so that is religious instructions के नजरिए से बात हो रही है. ठीक है, though in certain area we have linguistic minorities, है ना, लैंग्वेज की माइनॉरिटी होती है, पर कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया है, पर कुछ और लॉ के मुताबिक उसको एक्सेप्ट किया जाता है. So protection of interest of minorities, it says any section of citizens residing in the territory of India or any part thereof having a distinct language, script, culture of its own shall have a right to conserve them. And then article number 30 says right of minorities to establish and administer educational institutions. So these are the 2 rights for the protection of minorities. Then we have article number 31. Article number 31 was right to property. ये था right to property करके जो ये right था जिसको हमने repeal कर दिया है. It has been repealed, it has been removed, it has been repealed. So हम किसी को property का अधिकार वैसे as a state cannot provide. It should be part of legal right. Okay, it should be part of legal right. It cannot be a fundamental right, और इसकी वजह से हमने इसको repeal कर दिया. And then we have article number 32 which talks about the right to constitutional remedies. Right to constitutional remedies. Now this is one of the very important part. ठीक है, हमारे जो forefathers थे, हमारे जो fathers of constitution थे, उन्होंने ये समझा that while we are making our constitution, we have developed certain institutions, and those institutions may have a lot of power. For example, executive, legislature, judiciary, they have a lot of power, and in doing their activity, they may impact, or they may, you can say, disturb, or they may create some trouble to the citizens. And once while working on their own, they are creating some trouble to citizens, what remedy we have is what mentioned here. हमारे पास कोई remedy है? अगर कोई ऐसी गवर्नमेंट बॉडी लॉ के मुताबिक ही काम कर रही है और उसके द्वारा हमको नुकसान हो रहा है, हमारा कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, ठीक है, डू वी हैव एनी काइंड ऑफ प्रोटेक्शन अवेलेबल? यस. सो दैट इज आर्टिकल नंबर 32 that calls right to constitutional remedy. Okay, and this is called heart and soul. This is what Dr. B.R. Ambedkar said. It is heart and soul of our Indian constitution. ठीक है, so these are called writs. Writs means written order. Writ means it is written order, and there are 5 writs are provided. Okay, ये writs ऐसी है जिसके लिए आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और हाई कोर्ट में जा सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए आर्टिकल नंबर 32, हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल नंबर 226. ठीक है, हाई कोर्ट आर्टिकल नंबर 226 के द्वारा काफी ज्यादा ब्रॉडर सेंस में गिना जाता है. ठीक है, और इसकी वजह से इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड आर्टिकल दिस राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, उसके अंदर हाई कोर्ट का पावर थोड़ा ज्यादा माना जाता है कंपेयर टू you can say सुप्रीम कोर्ट का पावर. ठीक है, इन वन ऑफ द लीगल मैक्सिम वीडियो we discussed this issue
in detail. I would suggest please watch that video. That will give you a good clue. That was a legal maxim second session. Please आप उसको देखिएगा. Coming to this, है ना, 5 रीट्स है. कौन सी रीट्स है? हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्टियोरारी, क्वो वारंटो, प्रोहिबिशन. एक एक करके समझते हैं. हेबियस कॉर्पस, it says you may have the body or show me the body. It says a writ that commands an individual or a government official to produce a person who has been restrained to be produced as a designated time and place. कल उठ के कोई पुलिस किसी बंदे को आके पकड़ के जेल में डाल दे. Though there is article number 22, ठीक है, पर अगर हमें पता ही नहीं हो कि पुलिस इसको कहाँ लेकर गई है और हमें डाउट है कि पुलिस शायद लेकर गई हो, ऐसा हो सकता है, तो भी हम हाई कोर्ट पे जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट पे जा सकते हैं, है ना, कोई भी टाइम पे जा सकते हैं, एंड वी कैन आस्क फॉर दिस रीट हेबियस कॉर्पस एंड देन पुलिस have to produce that person in front of the magistrate. That is called habeas corpus. Coming to number 2, mandamus. Remember, mandamus and prohibition, these two are, ये दोनों एक तलवार की दो धार है, ठीक है. They are double edged sword. ठीक है. क्या करते हैं समझते हैं. एक तरफ mandamus बोलता है we command, और दूसरी तरफ prohibition बोलता है we stop, we prohibit. So what is we command? An order issued to a subordinate court or a government officer or a corporation commanding the performance of certain duties. कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या कोर्ट की जो ड्यूटी है उनको परफॉर्म करनी चाहिए, और वो कोई कारण से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं या नहीं करते हैं, और जिसकी वजह से आपका फंडामेंटल राइट अफेक्ट होता है, then you can ask them compulsorily to perform that duty. That's called mandamus. And similarly, कोई ऑफिसर, है ना, ठीक है, कोई ऑफिसर या कोई कोर्ट अपना ड्यूटी, है ना, बजा रहे हैं, और पर जिसकी वजह से आपका या मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, then we can go to the court and ask for prohibition, saying that an order, ठीक है, that prohibiting an officer or a court to take up that matter, ठीक है. So that is what basically called prohibition. ठीक है. Coming to number 4, that's called certiorari. Certiorari means to be informed of or to be made of certain in regard to an order of a higher court directing the lower court or a tribunal or a public authority to send the record in the given case for the review. So that is called we certify कि भाई higher court lower court को बोलती है now the case is with me, kindly send all documents. So we certify that you have to send all documents to us. And then we have a quo warranto. Quo warranto says by which warrant or by what warrant. So let's say, for example, just hypothetical case, tomorrow let's say Mr. Modi moves out of his office and we go, and let's say I go in his office and I sit in his chair and I say tomorrow onwards I'm a prime minister of this country. ठीक है. So there is a provision, many of you can say can go to the court and issue a writ and ask me by what warrant I am holding this particular position. Okay, so if I am holding a position without a particular warrant, I may be denied. I am denied holding that position, an order against a person who claims or asserts a public office. So भारत में कभी भी कोई पब्लिक ऑफिस के ऊपर असर मतलब इलीगली उस पोजीशन को अपने हाथ में नहीं ले सकता है. So that is what article number 32 protects, that gives us remedy. गलती होने के बाद उसके सामने क्या रेमेडी अवेलेबल है, that is what being discussed in article number 32. So this is where the fundamental rights are coming. Fundamental rights are very crucial. They are given to people like you and me against the state. They are given to not only citizens but they are also given to the other people, है ना. कुछ राइट्स सिटीजन्स के लिए, कुछ राइट्स सभी लोगों के लिए. सो दिस इज वेयर वी हैव डिस्कस दिस. आई एम एक्सपेक्टिंग कि प्लीज आप इस पूरे वीडियो को 2 से 3 बार देखें, अपनी नोट्स वापस बनाइए, इसको ऊपर से देखना नहीं है. आई हैव डिस्कस्ड इन ग्रेट डेप्थ. मैंने इसके अंदर काफी ज्यादा डिटेल में चीजों को डिस्कस किया है. हर एक पहलू को मैंने अलग अलग एंगल से डिस्कस करने की कोशिश करी है. आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप इसको 2 से 3 बार देखें, अपनी नोट्स बनाएं और इसके साथ
है ना। इसके PDF को देखना मत भूलिएगा at protalentdigital.com, ठीक है। चलिए, so total in 2 modules we have covered fundamental rights. Now we will move towards the next part related to our Indian Constitution, which is called DPSP, fundamental duties, और उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है, in the next module. Till then, I'm thanking you for being with us, and do not forget to like this video, share this video to the fullest, and make sure that if you have any query to put that into a comment section. Okay, thank you very much and have a great day.